नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन आवर ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 7 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए एंजॉय कीजिए हमारे इस वीडियो का। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर फ्रैक्शंस? फ्रैक्शन क्या होते हैं? फॉर दिस, लुक एट द गिवन figure. This is given figure and it is a whole figure. We can divide it into two equal parts by drawing a line. So this whole figure is divided in two equal parts and said only one part of the figure. Each part is called one half of the whole. We write it as 1 by 2. Look at the given figure. This is a whole figure and we can divide it into two equal parts by drawing a line. Set only one part of the figure. Each part is called one half of the whole. We write it as 1 by 2. How to read fractions? How to read fractions? 1 by 2 is read as 1 upon 2 or 1 by 2. 3 by 7 is read as 1 upon 7 or 3 by 7. 2 by 5 is read as 2 upon 7, 2 upon 5 or 2 by 5. 7 by 9 is read as 7 upon 9 or 7 by 9. The following figures are divided into three equal parts. We can see the figure and these figure divided in three equal parts. When a whole is divided into three equal parts, these are three equal parts. Each part is called 1/3 of the whole. 1/3 is written as 1 by 3. So we can say that this is the 1/3 part of the whole represented as 1 by 3. Which of the following figures are divided into three equal parts? These are figures. So which figures is divided in three equal parts? Yes, first part it is correct, divided in three equal parts. Second one is not divided in three equal parts. Third one is also not divided in three equal parts. Fourth one is also not divided in three equal parts. And next one is also not divided in three equal parts. This figure is also not divided in three equal parts, and this one is once again divided in three equal parts, and last one is also not divided in three equal parts. Look at the figure given below. This is the first figure. It has three equal parts. Two parts are shaded. The fraction for the shaded part is
2 by 3. That is 2 upon 3. It is read as 2/3. And this is the next figure divided in 4 equal parts. And there are 3 parts are shaded. The fraction for each shaded part is 3 by 4 because total parts are 4 and 3 is shaded. So this is represented 3 by 4 and it is read as 3/4. Match the following fractions to the figure. These are fractions and we will match each fraction to the given figure. So see 5, 9. Which figure represented 5 by 9? So this is the figure. Second is represented 5 by 9. Why? Because total parts are 9 and 5 parts are shaded. So this is the fraction 5 by 9. Now next one fraction is 2 by 8 and this is the figure number 3rd represented 2, 8. That is 2 by 8 because total parts are 8 and 2 are shaded. Next 1 by 5 and this one first figure is represented the fraction 1 by 5 because one part is shaded and 5 total parts are there. Now next fraction 6 by 7. So this last figure is represented the fraction 6 by 7 because total parts are 7 and 6 are shaded. So this is 6 by 7. Now next fraction is 2 by 6. We can see that this is 2 by 6 and this is represented figure number 4 because total parts are 6 and 2 are shaded. And last fraction is 4 by 6 and we can say that the figure number 5 which had total 6 parts and 4 parts are shaded. So these are the matching. Parts of a whole are called fraction. So the definition of fraction is parts of a whole are called fraction. That is 1 by 2 means parts considered 1 and divided in total 2 equal parts. Total number of equal parts are 2. So numerator is 1 and the denominator that is 2. And then fraction is represented by numerator divided by denominator. So this is the notation of a fraction. Remember, let's U is the word numerator. Letter U is in the word numerator and the word up is also started from U. So upper part is numerator and this is the upper part. So upper part is known as the numerator. So in this fraction 3 by 8, 3 is the numerator. And remember, letter D start the word denominator and the word D means down. Downward is also started from the D, letter D. So keep in mind that, remember that denominator means downwards. So 8, this is just in the fraction down and down means this is denominator. So in the fraction 3 by 8, 8 is the denominator. So I think that
the confusion of numerator and denominator will be clear, because 3 is the upper part and numerator containing u, so upper part is known as numerator, and d is the denominator means down, and down part is known as denominator. Write the fractions for the shaded part. So this is the figure. Total parts are given and shaded parts are also given. So we need to write this into the fractional form. So numerator shaded part and the denominators are total parts. So numerator, that is 5, are the total shaded parts, and denominators total parts. So total parts are 10. So we can write this into the fraction form, 5 by 10. Next one figure, and in this figure we can say that numerator, that is 5 parts are shaded, and total denominators have total parts 8. So this figure is represented by the fraction 5 by 8. Think that the concept of fraction will be clear. So keep it up watching the video and enjoy it. देखते रहिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए इस वीडियो का आनंद उठाइए. चलिए आगे बढ़ते हैं. Equivalent fraction. How can you say that the fractions are equivalent? Is the shaded part in each pair of figures same? We can say here the shaded part, the total parts are 4 and shaded part is here 1. Okay, and here is total parts are 8 and shaded parts are 2. So these two figures are said to be equivalent. Next figure, we can say that here is, these are also equivalent. Why? Because total parts are 4 and 1 is shaded, and here is total part just double 8, and shaded part is also double, that is 2. So these are also equivalent. How can you say that these are equivalent? In the first figure, total parts are 4 and 1 is shaded, and here is total parts are 8, just double of 4, that is 8, and shaded part is 1. So here is just double of 1, that is 2. So these are known as equivalent, and this is also equivalent. In the third figure, total parts are 4 and shaded is 3, and in the next just double of 4, 8, and just double of 3, that is 6. So this is also equivalent fraction. Yes, of course. Now, is the shaded part is both the figure are same? We can say here total parts are 2 and shaded is 1, and here is total parts are 8 and shaded is 4. Yes, of course, the shaded parts are equal, because total parts are 8 and half of it is 4. Similarly, total parts here is 2 and half of half of 2 is 1. So these are equal. What is the fraction for the shaded part? 1 by 2, and this is 4 by 8. So we see that 1 by 2 just equal to 4 by 8. Now, is the shaded part in both the figures same? These are two figures. Yes, of course both parts are
Same. What is the fraction for shaded part? That is 1 by 4 for the first figure and the 2 by 8 for the second figure. So we see that 1 by 4 just equal to 2 by 8. So these fractions, these figures are known as equivalent. Fractions which are equal in value to each other are called equivalent fraction. Again, the definition of equivalent fractions: fractions which are equal in value to each other are called equivalent fractions. For example, 1 by 2 is equivalent to 2 by 4, because when we simplify it, then we will get 2 by 4 just equal to 1 by 2. 3 by 4 is just equivalent to 6 by 8. Okay, because when we multiply here by 2, numerator and denominator, then we will get 6 by 8. Match the following equivalent fraction. So these are given figure 1 by 2 and these are the fractions. We will match it. So 1 by 2, 2 by 4, these are the equivalent fraction. 1 by 3 and 2 by 6, this is also equivalent fraction. And 1 and 3 by 3, this is also equivalent fraction, because total part is shaded here and here is also total part is shaded. So 3 by 3 is also 1 by 1, means these are equivalent fraction. And 1 by 4 and last this one also equivalent fraction, because total part shaded is 2 and here is total part is 1. Total whole parts is 8 and here is total whole part 4. The double of 4 is 8 and the double of shaded region is 2. So these are the equivalent fractions. Okay. After moving type of fractions, how many types of fractions? Fractions where the numerator is smaller than the denominator are called proper fraction. Means in which numerator is smaller than the denominator. जहां पर numerator छोटा हो और denominator बड़ा हो, उस केस में इस fraction को हम कहेंगे proper fraction. For example, 1 by 4. 1 is smaller than 4. 3 by 5. 2 by 7. 4 by 9. इन सभी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसीलिए इस फ्रैक्शन को क्या कहा जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर? सो व्हाट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन? इन विच द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर is called proper fraction. Fractions where the numerator is greater than the denominator are called improper fraction. जहां पर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? improper fraction. For example, 9 by 4. Clear? 9 is greater than 4 denominator. 7 by 2, 4 by 3, 8 by 7. इन सभी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है. 8 बड़ा है 7 से, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. 4 बड़ा है 3 से, 4 इज ग्रेटर देन 3. तो ये सभी फ्रैक्शन क्या कहे जाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो आई थिंक दैट it is clear what is the improper fraction. Fractions where the numerator is greater than the denominator are called improper fraction, and these are the example. Fractions which have same denominators are called like fraction. Means जहां पर denominator एक ही नंबर हो, उसको हम क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल 5 by 9, 3 by 9, 2 by 9, 4 by 9,
एसेट्रा। तो हम देख रहे हैं सभी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर फिक्स है, मींस 9 है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शंस। मूविंग फॉरवर्ड, फ्रैक्शन विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। जहां पर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो उस फ्रैक्शंस को हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यस ऑफ कोर्स, 5/9, 3/4, 2/3, 4/5 एसेट्रा। हम देख रहे हैं कि सभी डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो यहां पर हम इन सभी फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। 5/9, here is the 9 is denominator. 3/4, here is the 4 is the denominator. 2/3, here is 3 is the denominator. 4/5, here is the 5 is the denominator. So all the denominators are different, therefore this is known as unlike fractions. Fractions which have numeral 1 as numerator are called unit fractions. Clear? जहां पर न्यूमरेटर 1 हो, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, उस केस में हम उसे क्या कहेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यस, 1/9, 1/4, 1/3, 1/5 all are unit fractions. Why? Because in these fractions numerator are 1, so this is known as unit fractions. Comparison of fractions. How can you compare the fractions? Yes, of course. Let us enjoy the video. How to compare like fraction? Look at the figures shown below. Yes, of course. Total parts are 4 in both figure. Each figure divided into 4 equal parts. And figure A, total shaded part is 3, and here is total shaded part is 1. Which figure has more shaded part? Clear? Figure A has more shaded parts. Okay, so this is how to compare like fraction. Look at the figure once again given below. Here is total parts is 6, and in the second figure is also 6. Shaded part is 2, and here is shaded part is 4. Write the fraction for both figure, that is 2/6, and this is, yes, 4/6. Then which one is greater? Which fraction is more shaded area? Fraction number 2, that is 4/6 is more shaded area. Yes, of course. So we can say that 4/6 is greater than 2/6. Clear? Because total shaded part in this fraction is more than the first fraction, so this fraction is greater than the 2/6. This is the symbol of greater than. Okay, now moving for next, how to compare like fraction. Look at the figures shown below. There are total parts are 8 and shaded part is 2, so the fraction is for the both figure 2/7, and here is total part is 7 and shaded is 6, so we can say that 6/7. In which figure more shaded parts? Less shaded part, that is 2/7. Less shaded part is 2, that is 2/7, and more shaded part is 6/7, so this is less shaded area is 2/7. So we can say that 2/7 is less than 6/7. Clear? Okay, moving for next, how to compare like fractions. If there are two like fractions, then the fractions with greater numerator is greater in value. अगर आपको फिगर नहीं दिया है तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? You first of all observe the denominator. If denominator is same, then you observe the numerator. Which numerator is greater? The numerator 4 is greater than
this 3. So we can say that fraction 4/7 is greater than 3/7. Clear? क्या करना है, आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना है कि वो सेम है या नहीं. अगर सेम है तो आप फिर डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करोगे और न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करोगे. न्यूमरेटर में देखोगे कि कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4/7 फ्रैक्शन भी बड़ा होगा 3/7 से. सो वी कैन से दैट 4/7 इज ग्रेटर देन 3/7. If there are two like fractions, okay, then the fraction with smaller numerator is lesser than value. So 2/9 is less than 8/9. यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यूमरेटर 2 और यहाँ पे 8 है और डिनोमिनेटर सेम ही है. तो हम देख रहे हैं ये 8 है और ये 2 है. 2 छोटा है 8 से, तो इसका मतलब 2/9 is smaller than the 8/9. So we can say that 2/9 is less than 8/9. Okay. Now compare the following using less, greater or equal. So these are the fractions given here. What you put here? 5 same. 4 is greater than 1. I think that this fraction is, yes, of course, this is greater. Next fraction 3/7 and next one is 6/7. Denominators are same. So which one is 3 is less and 6 is greater? What you put? Yes, right. This is less. That is 3/7 is less than 6/7. So dear, enjoy the video. And now next fraction is 2/9 and 2/9. Since the denominators are same and here is numerator is also same, so what you get? Which sign will you appear here? That is, yes, of course you are correct, equal. You will put here equal because numerator and denominator both are equal. So you can say that this is equal fraction. Next one 4/6 and 3/6. So which numerator is greater? 4. Yes. What you put here? Yes, right, greater. So 4/6 is greater than 3/6. Now addition of like fraction. In the circle given below, only one part out of 5 is set. आप देख सकते हो टोटल पार्ट्स कितना है 5 और सेडेड कितना है 1. सो वी कैन सी दैट दिस इज 1/5. एंड इन दिस फिगर व्हाट टोटल पार्ट इज 5 एंड सेडेड इज 2. सो वी कैन सी दैट दिस 2/5. सो व्हाट यू गेट इन द फिगर total सेडेड पार्ट 2 and 1. हाउ मच 3. yes, correct. And we can say that this is 3/5. how? Because the said total parts is 2 and 1. 2 and 1 is 3 and total parts is there 5. 5 ही रहेंगे तो ये हो गया 3/5. So the circle has 3 sided parts. Okay. Addition of like fractions. Let us this is a fraction 2/6. Okay. And plus again this is what fraction? 3/6. Okay, so total sided part is 2 and 3, 5, 5 and 6. Yes, your answer is correct. Total sided part is 5 and total parts is 6. So this is 5/6 your answer. So 2/6 plus 3/6 is known as 5/6. Means you will add the numerator only. 2 plus 3 that is 5 and denominator you will write same to same. Now addition of like fractions. Okay, when 2 or more like fractions are added then only the numerator are added together. Keep in mind हमेशा numerator को ऐड करना होता है, denominator को कभी ऐड नहीं करेंगे. The denominators are not added together.
So now addition of like fraction, that is 1 by 8 and this is 3 by 8. What you get? You will not add the denominator, only add the numerator. So 3 and 1 and total studied division in the second part 3 and one part is 1. So total part is 4, that is 4 by 8. Yes, your answer is correct. And this is 4 by 4, means you can see that this is 1 by 2 because 4 1 जा 4 से कैंसिल करेंगे दोनों नुमरेटर और डिनोमिनेटर को. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. So we will get that is 1 by 2. So this is the answer. The answer should be written in the reduced form of fraction. इसको हम क्या बोलेंगे? Reduced form of the given fraction. Okay, clear? Moving for next, enjoy the video. Okay, addition of like fractions. Once again 2 by 5 plus 2 by 5 means what you add only numerator, that is 2 plus 2. What you get? That is 4 and by 5. So answer is 4 by 5. Let us 1 by 7 plus 2 by 7. What is the answer? Tell. Reply. Yes, your answer is correct. 1 plus 2 means 3 by 7. 3 by 7 is the answer. Let us new fraction 5 by 8 and 2 by 8. So tell, what is the answer of this? Yes, you are saying correct. 5 plus 2, that is 7 by 8. This is your answer. You will add only numerator to numerator and denominator you will write same to same. Now 3 by 9 plus 3 by 9. What you get? 3 plus 3? Yes, correct. Your answer is very correct. That is 6 by 9. Now subtraction of like fraction. How can you subtract? This is 3 by 6 and 2 by 6. What you get? Same to same process. You will subtract numerator to numerator. That is 3 minus 2, 1 by 6. 5 by 7 minus 2 by 7 means 5 minus 2. What? 3 by 7. Okay. Now for next fraction, 6 by 8 minus 1 by 8. You will again subtract numerator to numerator. That is 6 minus 1 by 8. You will get 5 by 8. 5 is the answer. The process is same, addition and subtraction. What you do? You will do only subtract numerator to numerator in each case and denominator you write same to same. Let us next fraction 7 by 9. 7 by 9 minus what? 5 by 9. So what you get? Tell the answer. Yes, your answer is correct. That is 7 minus 5 by 9. That is 2 by. Okay, correct. Reduced form of fraction. How can you reduce the form of the given fraction? Let us try to understand and enjoy the video. Reduced form of fractions. A fraction is said to be the reduced form if its numerator and denominator cannot be divided by a common number. Clear? अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी एक नंबर से डिवाइड ना हो तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म कहा जाएगा. एक ही नंबर होना चाहिए, सेम नंबर से वो डिवाइड अगर नहीं हो रहा है तो उसे हम रिड्यूस्ड फॉर्म कहेंगे. चलिए समझते हैं इसको एग्जांपल से. सर्कल द फ्रैक्शन विच आर इन द रिड्यूस्ड फॉर्म. यस, दीज आर फ्रैक्शन. 5 by 6, 3 by 9, 2 by 8, 1 by 4, 4 by 12, 5 by 7, 3 by 5, 9 by 18, 6 by 14, 3 by 8, 4 by 9, 8. These are fractions. So first one is 5 by 6. Yes, this is in the reduced form. Yes, of course, because 5 and 6 cannot be divided by a single number. Now 3 by 9. Yes, it is divided by a table 3. 3 से ये सेकेंड फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं है. दूसरा वाला भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 2 डिवाइड हो रहा है और 8 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी आपका रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं है.
1/4, yes, it is in the form of reduced form because this numerator and denominator cannot divided by a single number. 4/12, yes, it is not a reduced form because 4 is divided by 4 and 12 is also divided by 4. Yes, this is a reduced form. 3/7, yes, this is a also reduced form. 9/18, no, it is not reduced form because 9 is cancelled by a टेबल 9 और 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं होगा. ओके. 6/14, दिस इज ऑल्सो नॉट रिड्यूस्ड फॉर्म. ये दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 से कैंसिल हो रहे हैं. 3/8, yes, it is a reduced form because it cannot be divided by a single number. Yes, it is also a reduced form. And last one, yes, your answer is correct. This is not in the reduced form because both is cancelled by 2. 4, 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 4 से भी कैंसिल हो रहा है, तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं है. ओके, एंजॉय द वीडियो. मिक्स्ड नंबर्स. मिक्स्ड नंबर्स कैसे होंगे आइए समझते हैं. Mixed number included a whole number and a fraction is called mixed numbers. For example, whole number 1, this is whole and this is 1/8. So this is whole and this is the fraction. First one is whole and second one is a fraction. We can write it as 1 and 1/8. So this is the mixed number. Mixed fraction 1 and 1/8. Converting mixed numbers to improper fraction. Improper fraction में कैसे convert करेंगे? Convert 4 and 1/2 to a improper fraction. So this is the process. Step number 1, multiply the denominator 2 with whole number 4. न्यूमरेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 2 को होल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे. फिर क्या करना है? 2 into 4 you will get 8. ओके. आफ्टर दैट स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? ऐड दिस 8 टू द न्यूमरेटर. ऐड न्यूमरेटर 1 to 8. व्हाट यू गेट? 9. आफ्टर दैट क्या करना है? राइट 9 इन द न्यूमरेटर and denominator same to same, that is 9/2. 9 को न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर अपना प्लेस चेंज नहीं करेगा. डिनोमिनेटर 2 था, 2 ही रहेगा. डिनोमिनेटर 2 as the denominator of the improper fraction. So 4 and 1/2 convert into 9/2. Clear? Okay, moving for next. Mixed number 1 and 1/2, that is 9/2, and this is the improper fraction because numerator is greater than the denominator. Now converting improper fraction to mixed fraction. 7/3. अब 7/3 को मिक्स में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1, डिवाइड दिस 7/3. 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 2 6 and remainder is 1. तो रिमाइंडर 1 बचा और आपको जो कोशेंट मिला वो 2 मिला. 2 कोशेंट, डिवाइजर 3 ही रहा और रिमाइंडर 1. तो इन तीनों को हमें लिखना है. कैसे लिखेंगे? 2 is the whole. Step number 2, write the mixed number. After that the quotient become the whole number and 2 था. अब क्या हो गया? कोशेंट को लिखेंगे होल नंबर पर. अब रह गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर में क्या लिखना है? यस, रिमाइंडर. द डिवाइजर बिकम द डिनोमिनेटर. डिवाइजर डिनोमिनेटर हो जाएगा और रिमाइंडर आपका हो जाएगा न्यूमरेटर. सो 2 and 1/3. So 7/3 is converted into the improper fraction 2 and 1/3. So this is the mixed number. Converting improper fraction to mixed number. Improper fraction को mixed में convert करना है. Improper fraction that can be changed to mixed number.
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। मिक्स्ड नंबर चेंज टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में भी चेंज किया जा सकता है। क्लियर? When we add two like fractions with different numerator, we need to find LCM, that is least common multiple. Okay, so how can you add these unlike fraction, addition of unlike fraction, 1 by 2 plus 1 by 6, because numerators are not same. So first of all we will take the LCM. To change both fractions to like fraction, we find the LCM of 2 and 6. LCM of 2 and 6 is multiple of 2 are 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. And multiple of 6 are 6, 12, 18, 24 and 13. So which is the common? Common multiple of 2 and 6 are 6. Okay, so I think that LCM is 6. LCM is 6 और 12 भी हो सकता है। तो हम छोटा नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल दैट इज 2 and 6 इज 6। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आपका 6 ही है, तो आपका LCM हो गया 6। क्लियर? सबसे पहले हमने 2 का मल्टीपल्स लिखा, फिर 6 के मल्टीपल्स लिख लिए, और इसमें कॉमन मल्टीपल देखा, और कॉमन मल्टीपल में लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? वो है आपका 6। तो आपका LCM हो गया 6। नाउ वी कैन ऐड 1 by 2 plus 1 by 6, that is LCM of 2 and 6 is 6. Step number 1, the numerator of both the fraction is the same as the LCM. Okay, जो डिनोमिनेटर है वो 6 के समान ही होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए? वी विल टेक LCM एंड देन व्हाट यू राइट। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? डिवाइड द कॉमन डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन। इस डिनोमिनेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 6/2 क्या मिलेगा? 3, और 3 को फिर क्या करना है? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? मल्टीप्लाई 3 विद द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन। ये जो 3 आया उसको आपको यहां मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा? 3 × 1 3। ठीक है। और स्टेप नंबर 4, राइट 3 प्लेस ऑफ द फर्स्ट न्यूमरेटर। फर्स्ट न्यूमरेटर में हम 3 लिख लेंगे, यहां पे आ गया 3। ओके, प्लस अगेन फिर क्या करना है? इस 6 को इस 6 से डिवाइड करना है, तो क्या मिलेगा? व्हाट यू गेट? स्टेप नंबर 5, डिवाइड द कॉमन डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन। दैट 6 डिवाइड बाई 6 वी विल गेट 1। ओके, एंड 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 द न्यूमरेटर ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन। सेकेंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही था। 1 × 1 क्या हुआ? 1। तो आप यहां पे लिखेंगे थर्ड स्टेप में, दिस 1 यू राइट इन द सेकेंड प्लेस ऑफ द न्यूमरेटर। राइट 1 प्लेस ऑफ द सेकेंड न्यूमरेटर, दैट इज 3 + 1। 3 + 1 व्हाट यू गेट? 3 + 1। स्टेप नंबर 8 में क्या करना है? दोनों न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। ऐड द न्यूमरेटर, देन यू विल गेट 4/6, एंड दिस इज योर आंसर। That 1/2 plus 1/6 we get 1/6, 3/6. Okay, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन 1/2 plus 1/4, इनको प्लस करना है। तो LCM कितना आएगा? डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, LCM लेना पड़ेगा। LCM इज 4, तो 1/2 plus 1/4 कितना हो जाएगा? 2/4 plus 1/4. You will get the numerator, said it is 2 and 1 3, and total part 4. So this is the addition of the given number. Addition of mixed fraction. अब हम लोग mixed fraction का addition सीखेंगे. So enjoy the video.
let us the fraction 4 and 1 by 5. This is the mixed fraction and 2 by 5. So these are two fraction. क्या करेंगे? Step number first, change the mixed fraction to an improper fraction. जो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है इसे सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. कैसे करेंगे? 4 and 1 by 5 means you will multiply this numerator to the whole numbers. So 4 और 5 को multiply करना है. So 4 and add this into the numerator, और इसे numerator में add कर देना है. तो 4 into 5 plus 1, 4 into 5 means 20, 20 plus 1 means 21 upon 5. So 4 and 1 by 5 is convert into the mixed fraction. After the step number 2, add both the fractions. दोनों फ्रैक्शन को अब हम ऐड करेंगे. मीन्स ये फ्रैक्शन कन्वर्ट अब किस में हो गया? 21 by 5 plus 2 by 5. तो हम देखेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम ही है. सो नो नीड टू टेक द एलसीएम. एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है. So 21 by 5 plus 2 by 5, this is 21 plus 2. Direct we will add numerator to numerator. So 21 plus 2, that is 23 by 5. So the mixed fraction, that is 4 and 1 by 5 plus 2 by 5 gives 23 by 5. So this is the answer of this question. Okay. Now moving for next. Subtraction of unlike fractions and mixed fraction. Unlike fraction और mixed fraction का subtraction कैसे करते हैं? Process are same, just like to addition. करना क्या है? चलिए सीखते हैं. When we subtract two unlike fractions to the denominator, we need to find least common multiple of two न्यूमरेटर्स. क्या करना है? हमें एलसीएम लेना है. तो सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट्स 2 by 3, दिस इज ए फ्रैक्शन, एंड माइनस 1 by 6, दिस इज ए अनदर फ्रैक्शन. वी वांट टू सब्ट्रैक्ट दीज टू फ्रैक्शंस. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हम लोगों ने यहाँ पे डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व किया. डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट इट डायरेक्टली. अब क्या करना है? Take the LCM. To change both fraction to like fractions, we find the LCM of 3 and 6. Multiple of 3 are multiple 3 का लिखिएगा. तो क्या लिखना है? 3 का टेबल लिख दीजिए. 3, 6, 9, 12, 15, 18. तो ये and so on. So these are the multiple of 3. Multiples तो जानते हैं ना. Now multiple of 6. अब 6 का मल्टीपल लिखना है तो इसके लिए क्या करना है? 6 का टेबल लिख देंगे. 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन. अब क्या करना है? इन दोनों में कॉमन मल्टीपल ढूंढना है. सो सर्च द कॉमन मल्टीपल. कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 6 आर, पहला क्या हुआ? 6. 6 कॉमन है. उसके बाद क्या कॉमन है? 12, और उसके बाद फिर 18. लेकिन और ज्यादा जरूरत नहीं है, तो क्या करना है? 6 और 12 हम लोगों ने लिख लिया. 6, 12 एंड सो. बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कौन सा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम ऑफ 3 and 6 इज 6. सो 6 तो हमारा एलसीएम हो गया. अब क्या करना है? सेम प्रोसेस अप्लाई करना है जैसे एडिशन में किया था. वी विल राइट 6 इनटू द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में हमें 6 को लिखना है. नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट, दैट इज 2 by 3 minus 1 by 6. दिस इज, वी कैन राइट एलसीएम ऑफ 3 and 6 is 6. सो स्टेप नंबर 1 क्या करना है? द न्यूमरेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शन इज द सेम एज एलसीएम. अब हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है. जो एलसीएम है हमारा, उसी के इक्वल हमारे दोनों डिनोमिनेटर होने चाहिए. तो हमने 6 लिख लिया. अब रूल क्या है? फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखेंगे. फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है? 3. 6 को 3 से डिवाइड करेंगे. तो 6 को 3 से डिवाइड करें. 3 6 जा, सॉरी 3 2 जा 6, 2 टाइम्स डिवाइड होगा ना.
तो अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड द कॉमन डिनोमिनेटर विथ द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन। ये तो कॉमन डिनोमिनेटर हो गया 6 क्या है, 6 इज द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ बोथ फ्रैक्शन। अब फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 3, तो 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे, तो 6 डिवाइड बाई 3 वी विल गेट 2। और इस 2 को हम स्टेप नंबर 3 में क्या करना होता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 2, मल्टीप्लाई 2 विद द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन। तो देखिए क्या मिलेगा, 2 एंड दिस 2 2 जा 4। ओके, so we will write this 4 in the first place of the addition. We write 4 in the place of the first row numerator, that is 4, and put this sign minus sign. After that this 6 divide to this 6, तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो स्टेप नंबर नेक्स्ट हमारा क्या होगा, डिवाइड द कॉमन डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन। सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से कॉमन डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा 6/6 मीन्स 1 मिलेगा, और इस 1 को हम सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई 1 विद द न्यूमरेटर ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन, तो क्या मिलेगा 1 into 1 that is 1, and this 1 we will write in the next step. इस 1 को कहां लिखना है, सेकंड प्लेस पर। राइट दिस 1 in the place of the second numerator, सेकेंड न्यूमरेटर की जगह हम लिख देंगे। नाउ दिस इज सब्ट्रैक्टेबल, अब ये सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो 4 minus 1 व्हाट यू गेट 4। स्टेप नंबर 8 में क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट कर देना है केवल, तो क्या हो जाएगा 4 minus 1 मीन्स 3, एंड डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा 3/6। सो डियर वी विल गेट 2/3 minus 1/6 equal to 3/6. This is the answer. Now we will subtract of the numerator unlike fraction, that is 1/2 minus 1/4. What you get? We will get the denominators are different, so we find the LCM of 2 and 4. 2 and 4 का LCM अब हम फाइंड करेंगे, तो क्या मिलेगा 2 and 4 का अब जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा। 1/2 minus 1/4 what you get, you will get 2/4 minus 1/4, that is what 2 minus 1। आप देख सकते हो शेडेड पार्ट कितना है 2 है, और सेकंड फ्रैक्शन में शेडेड पार्ट कितना है 1 है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 1 ही तो मिलेगा। 1/4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड नंबर का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है चलिए वो भी सीखते हैं। लेट द फ्रैक्शन इज 3 and 2/7 and minus 2/7। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, चेंज द मिक्स फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो कैसे करते हैं, वी विल मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर टू द होल नंबर, दैट इज 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसे न्यूमरेटर में प्लस कर देना है, तो 7 3 जा 21 plus 2 that is 23/7। Convert, so this is convert into the improper fraction. Now we can subtract this 23/7 to the 2/7, subtract both the fractions, that is 23/7 minus 2/7, what you get, denominators are same, so direct we will subtract numerator to numerator, that is 23 minus 2 what 21/7. So the answer of 3 and 2/7 minus 2/7 is 21/7. This is the answer. Okay, moving for next, multiplication of fractions. अब fractions का multiplication कैसे करते हैं चलिए वो भी सीखते हैं। Enjoy the video. How to multiply a fraction by a whole number. Try to understand. 5/8 this is a fraction and this one a whole number 4. तो क्या करना है, we multiply only the numerator of the fraction with the whole number. इसको याद रखना है, whole number को numerator से ही multiply करना है।
तो क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बोलना है, वो सेम ही रहेगा। तो क्या हो गया 5 into 4/8 that is 20/8. We should write the answer in the reduced form of fraction. So both the numerator and denominator divided by a number that is 4. 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से भी हो रहा है, 4 से हो रहा है तो 2 से करेंगे तो 2 बार करना पड़ेगा, 10/4 और 10/4 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/2. सो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5/8 into 4 we will get 5/2. 5/2 is the answer. How to multiply a whole number by a fraction? अब whole को fraction से कैसे मल्टीप्लाई करना है, सेम रूल, न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना, वी मल्टीप्लाई द होल नंबर ओनली विद द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर से कुछ नहीं बोलना है, द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम. सो 5 into 6, numerator is 6 and 5 is the whole number, so 5 into 6 divide by 9, so 5 6 is 30/9. And you can of course write this into the reduced form because both the number is divisible by 3. तो 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10 और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3. सो वी विल गेट 5 into 6/9, this equal to 10/3. So this is the answer of this question. Okay, right? I think that enjoy the video. Okay, moving for next, how to multiply a fraction by a fraction. फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कैसे करना, सिंपल. These are two fractions, you want to multiply, तो क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. कीप इन माइंड, यहाँ पे डिनोमिनेटर रिमेन्स नहीं रहेगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर भी चेंज होगा. We multiply both the denominator, we multiply both the numerator, that is numerator क्या है 2 and 6, denominators क्या है 3 and 7. तो 2 and 6 means 12, 3 into 7 means 21, so 12/21. so reduced form क्या हो जाएगा, both number is divisible by 3, so 12/21 divide by 3. 12/3 means what, 4, and 21/3 means 7. So the multiplication of 2/3 and 6/7 is 4/7. So this is the answer of this question. Clear? Moving for next one. Okay. Thank you dear watching my video up to last, but not forget to like, share and comment it and subscribe my channel so that you get my video first of all.